बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीएससी एफपीएससी वन पेपर के एग्जाम्स के लिए। सो फर्स्ट वन इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स स्पेशली देयर फॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, दैट इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। नेक्स्ट इज़ द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, दैट इज़ कॉल्ड डैक्टिलोग्राफिक। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल एएस पीपीएससी गाइड एंड इंग्लिश प्रिपरेशन को लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। आपको इस चैनल पर पीपीएससी और एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, दैट इज़ कॉल्ड एथियोलॉजी. Next is the study of production of better offspring by the careful selection of parents, that is called eugenics. The study of effect of environment on workers. Environment का जो इफेक्ट होता है वर्कर्स पर, उसकी जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, that is called ergonomy. The sun therapy is called हेलियोथेरेपी. नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज़. स्टडी ऑफ टिश्यूज़ जो होती है वो क्या कहलाती है, दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी. द स्टडी ऑफ टीथ जो होती है दैट इज़ कॉल्ड ओडोंटोलॉजी. नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्थोपी. नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, दैट इज़ कॉल्ड पेडागोजी. द स्टडी ऑफ रॉक्स, जो चट्टानों की स्टडी होती है, दैट इज़ कॉल्ड पेट्रोलॉजी. Next is the study of written records, their authenticity, etc., that is called philology. Next is the study of speech, sounds and production, transmission, reception, that is called phonetics. Next is the study of human face, that is called physiognomy. Next is the study of ancient writing, that is called paleography. The art of elegant speech or writing is called rhetoric. The study of caves is called speleology. Next is the admirer of art, that is called dilettante. Next is use of mild word in place of words required by truth, that is called euphemism. That which is pig-like, that is called porcine. That is fox-like, that is called vulpine. Next is study of law, that is called nomology. Next is study of fossils, that is called paleontology. Next is statement that is obviously true, that is platitude. Next is temple dedicated to all the gods, that is pantheon. The study of physical phenomena of lakes is called limnology. Next is serious crime like murder, arson, etc., that is called felony. Next is secret place difficult to reach, that is called recess. Next is secret religious meeting, that is called conventoid. Next is showing contemptuous indifference, that is supercilious. A short summary of a book or speech, that is called epitome. Next is a short saying or poem which express an idea in a very clever and amusing way, that is called epigram. Next is scornful and contemptuous language is called opprobrium. The last one is science of time is called horology. I hope it's clear to all of you. काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.